Assalamu alaikum everyone. Welcome to Pace Space Yaar. It's a very somber moment in Pakistan right now. अभी कुछ ही घंटे पहले लाहौर में एक blast हुआ था and before we begin, we just like to send out our respects to the victims there, the people who are injured. We wish that they get well soon. और जो शहीद हुए, we pray that they rest in peace. Um, so, so moving beyond that bit of tragic news, other than that, it was quite a remarkable day in Pakistan cricket. Hassan Chima, I think, has witnessed Asad Shafiq century in South Africa, Yunus Khan century. मगर आज मेरे ख्याल में जो हसन ने अपने बचपन से मतलब जो 5 ही सवाब किए थे उन सारों का अच्छे काम किए तो उन सारों का सवाब उसे अभी मिल चुका है तो हसन why don't you start off the day that Misbah ul Haq equaled the record for fastest test century in 137 years of cricket. Uh, Basically, one thing encapsulates the whole Misbah thing, which is कि आपका yesterday after the follow-on, as I said yesterday, कि Usman and myself aside, everyone was like Phattu, conservative, जीत नहीं रहे, etc., etc. Today, after the day's play, Misbah walked into a press conference to a standing ovation. So, Wow. which was Wow, this doesn't happen. basically, This doesn't happen. yeah, basically in 26 hours, 26, 27 hours more or less. And we almost got a standing ovation जब उसकी 100 हुई भी है मतलब कि वो होता है ना the last time I saw basically the whole press box basically engulfed by मतलब कि they obviously Pakistanis are more into being biased than generally what I've other जो मैंने press packs देखे हैं but even then there is a decorum and all that. The only time before this I've seen a press box like this is जब अफरीदी ने 88 किया था because मतलब कि there is a point when all the stuff about being neutral, being मतलब कि a student of the game and separating yourself from what's happening on the field just मतलब washes away because जो हो रहा होता है on the field it is मतलब enjoyable to the point that everything else overrides that. And the innings from Misbah today, from I think this over to Smith onwards was exactly that. Although there was lunch in the middle और उसमें काफी बात हो रही थी कि अभी declare कर दे या वो जो मर्जी. But the way he came back after lunch and apparently he said कि he didn't know कि वो record until like he was in his 80s और किसी ने message भेजा था कि भाई तूने पता नहीं कि 17 करना है 8 गेंदों पे या इस तरह करके तो दैट वाज द मोमेंट ही फाउंड आउट कि ये रिकॉर्ड अंटिल देन उसका पूरा ये था कि मैं मार ही जाऊं और अजहर की 100 हो जाए और आधा घंटा बैटिंग करनी थी आफ्टर लंच व्हिच वाज लाइक घंटा की बिकॉज़ बोथ ऑफ देम वर गोइंग टू गेट देयर 100s. और मजे की बात ये थी कि आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस वन ऑफ द टीवी चैनल्स उसके लिए सेपरेट वो बना रहे थे तो उसमें उसने से सवाल पूछा कि आपका एम क्या था क्या कर रहे थे तो he was going to say पहले भी उसने कहा मैं बस बल्ला घुमाई जा रहा था बट फॉर वंस उसने दरम्यान में कहता है कि मेरा बस यही एम था कि मैं जो जाके टुल्ले मतलब बस बल्ला घुमाई जाऊं तो and Usman asked him के have you ever before this batted in less pressure in the international game and he was like कि नहीं वो आपको मेरी बैटिंग से अंदाजा नहीं हो रहा था. आई थिंक वो जो उस्मान की एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि अजमल के जाने के बाद मिसबाह हैज़ बीन लिबरेटेड एंड वी सॉ दैट बॉलिंग में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था मगर जिस किस्म की ये बैटिंग कर रहा था आई थिंक 2007 शायद उसके बाद से हमने मिसबाह की ऐसी बैटिंग देखी नहीं है और यही आयरनी है क्योंकि आई थिंक 2000 से लेकर 2007 तक मिसबाह वाज फेमस एज वन ऑफ द T20 प्लेयर्स इन पाकिस्तान. ही वाज अ कैप्टन ऑफ फैसलाबाद वुल्व्स काफी मतलब जबरदस्त रिकॉर्ड था उनका और इसके मतलब ही वाज आल्सो ड्राफ्टेड इनटू द साइड एज लाइक अ लेट ऑर्डर सॉर्ट ऑफ स्लॉगर फॉर लैक ऑफ बेटर टर्म फिनिशर और स्लॉगर किस्म का बट उसके बाद से मतलब हमने पिछले 4 साल में ऑब्वियसली ये देखने का हमें ऐसा मौका इतनी सस्टेन्ड उसके लिए नहीं नजर आया है. आबिद, you have any thoughts? Yeah, I mean, to be very honest, the first thing that I thought was that of all the people in Pakistan, of all the people, it had to be Misbah. I mean,
You imagine these things about how Afridi or Misbah is something of basically is becoming this binary in our Pakistan cricket. Unfortunately, it's really, I mean, both are like equally important for us, but how we have made it this debate between either an Afridi or then you're a Misbah Tard. And then you sort of switch between the two. And I was just laughing about the fact that Yaar, it had to be Misbah who comes out and does this most remarkable innings, really. I mean, that onslaught against Stephen Smith, the clean hitting that it was 6-6-4, 6-4-6-6. It was just beautiful to watch, frankly speaking. And what Misbah has done basically, I don't see any reason for any detractor, any critic to say कि Misbah को निकाले. And this was really important in the context कि Misbah before this ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में उसने खुद को ड्रॉप किया परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी पिछले 5-6 मैचेस से बट ही कंप्लीटली शोड कि जी थोड़ा सा मुझे अगर सपोर्ट मिले टीम से इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑर्डर सस्टेन कुछ करे कोई स्कोर तो हो स्कोर कार्ड पे आई मीन इसके अलावा और इसका जो आप समझ ले फॉल आउट कहना चाहिए even इसकी फील्ड ऑन फील्ड कैप्टनसी भी it had been very positive. He had been proactive to a point where I mean you can see him smiling, you can see him pretty much under control of what's going on. इसका जो ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है पूरी सीरीज का ऑन द मोरल ऑफ द टीम द मोमेंटम आ रहा है बिकॉज ऑफ वन और टू सीनियर प्लेयर टेकिंग चार्ज इट्स अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग टू बी अ पाकिस्तान फैन राइट नाउ या सो क्या कहते हैं आई थिंक एक और बड़ी मजेदार बात थी कि शुरू में ही मिसबा जो दूसरी पहली बॉल चौका दूसरी बॉल पे मतलब स्लाइस्ड ऑलमोस्ट गंदा आउट शॉट उस पे आउट होने वाला था और मतलब आई मीन दैट वाज द स्टार्ट ऑफ मेनी आफरीदी सिमिलैरिटीज थ्रू आउट दिस इनिंग बट आई थिंक क्रिकेट की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज टेस्ट मैचेस में अगेन there's that freedom that obviously you don't get in the limited overs game. But one thing I wanted to ask was, does this also show that Misbah की एक limitation यही है कि he also has just two gears, a first and a fifth. Yeah. Yeah, I asked Bazid that कि basically मतलब regarding his career के क्या scene था तो he was telling me कि before the 2001-2002 season, which is, I've written about this in my piece as well. So I was basically मतलब I'd heard about this, but Bazid gave me like a more detailed account of that. तो he was like कि उससे पहले बड़ा मशहूर था ये कि वो सर्विसेज की तरफ से खेलता था बड़ा मशहूर था कि एक वो सर्विसेज का लड़का है वो लंबे लंबे छक्के मारता है और कुछ नहीं करता वो So and then 2001 he was going to basically retire. He was like already 27, 28. तो कि फाकेट नेशनल टीम में तो आना नहीं है एक सीजन था कि मैं इस सीजन करता हूँ कुछ और देखता हूँ फिर क्या होता है तो दैट सीजन ही बेसिकली स्टार्टेड दिस होल मतलब कि आराम से इनिंग्स बिल्ड करना 40 आराम से करना फिर मारना शुरू करना एंड ऑल दैट सीजन ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन द डोमेस्टिक गेम 1300 रन्स एट 63 की एवरेज और आफ्टर दैट ही वाज सिलेक्टेड फॉर दैट 2002 वो केन्या में भी सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 मैच सीरीज थी उसके लिए भी हुआ था एंड सिंस देन फ्रॉम 2002 टिल अबाउट 2006 he was the highest scorer in the domestic game basically playing this way कि 40-50 तक वो basically 50 तक वो आराम से करता था फिर वो बल्ला घुमाई जाता था इस वजह से उसका मतलब कि वो कन्वर्जन का भी वो इस इवन फर्स्ट क्लास में भी देखें it is not as good as it should be. Yeah, I'm looking at his record. His first class record is 3800 7850s. हाँ तो बेसिकली लेस देन 1 and 2 which मतलब कि मोस्ट गाइज आई डोंट थिंक आप उनका देखोगे तो आई आस्क्ड हिम कि मतलब कि हैव यू सीन अ बेटर हिटर मतलब कि आई थॉट अबाउट अफरीदी आई थॉट अबाउट इंजमाम मतलब कि एवरीवन हिट सीन वो कह रहा है नहीं ऑनेस्टली इज द ओनली मतलब in terms of pure clean hitting पाकिस्तान में he mentioned some other guy सियालकोट का I forget what his name was उसके अलावा मिसबा is the cleanest hitter that Pakistan has ever had because कि इसको जरूरत भी नहीं पड़ती कि मतलब आगे बढ़ के खेले या क्रॉस लाइन खेले बेसिकली मतलब खड़े खड़े जो मारते हैं ना और स्पिनर को और मीडियम पेसर को कहता है कि जब इसका दिल करता है मार लेता है I completely agree with Hassan. In fact, जो स्मिथ वाल ओवर की मैं एग्जांपल दोबारा दूंगा. I mean, अच्छा मैं टीवी देख रहा था यहाँ पे and the moment Misbah would hit a shot and मेरे मुंह से बेसाख्ता निकलता कि ये तो 6 है. As in it did not like the moment ball leaves the bat, you know that it's a 6. और पाकिस्तान में I think apart from Razak, I don't think इसके अलावा मैंने किसी और को इतना कॉन्फिडेंस एक आपको सुकून होता है ना दिल से कि जी ये तो छक्का है इसमें तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है इस बॉल में कहीं ना बाउंड्री पे आउट नहीं होगा रज़ाक वाज वन प्लेयर हु वाज एबल टू डू दैट इंजमाम टू ऑफ कोर्स टू सर्टेन एक्सटेंट बट रज़ाक एंड मिसबा no question about that. Okay, so I asked him after the press conferences and everything
one final thing, I asked him कि मतलब कि how important was the 69 and the 100 leading into this innings. तो कहता 69 तो सबसे important थी क्योंकि उससे पहले लोग कही जा रहे थे मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, लेकिन मसला ये था मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था, तो मुझे पता चला कि मुझे इन फॉर्म हूँ कि आउट ऑफ फॉर्म हूँ, क्योंकि 10-15 गेंदों में आउट हो जाता था. तो कहता 69 मैंने मुश्किल कर लिया वो फर्स्ट टेस्ट वाला. दूसरे टेस्ट में था कि फर्स्ट इनिंग में टीम के लिए बिल्ड करे कहते जब मैंने 100 हुए ना तो मैंने कहा अब आ गया टाइम मजे लेने का, और मैं अगली बॉल पे आउट हो गया, मतलब स्मिथ का जो कॉर्नर बोर्ड था. तो कहता है उस पर मुझे रिग्रेट थी, तो मेरा था कि अब जिस सिचुएशन में जा रहा हूँ अब टाइम है मजे लेने का. बड़े अरसे से मैंने मजे नहीं लिया, तो अब मैंने मजे लेने हैं, तो आज उसने मजे लिए बेसिकली. Essentially, in a way, just His touches does करना not कि mind. सिडनी में मशहूर डबल सेंचुरी जिसपे उसने कवर ड्राइव नहीं मारी थी. तो मिसबा ने एसेंशियली वो इनिंग्स पिछले 4 साल से खेली है जो अपना वो कवर ड्राइव अपनी कोट एंड कोट बचा के बैठा हुआ है. लेट्स मूव ऑन टू सम पीपीक्यूज. वासिफ अहमद फारूकी का सवाल है, इज दिस द मोस्ट स्पाइनलेस ऑजी टीम एवर? तो जस्ट स्टार्ट दैट ऑफ, आई थिंक एक यही मतलब जो स्टीव वॉर एंड लेटर पॉन्टिंग एंड मतलब टू एन एक्सटेंट पॉन्टिंग और मार्क टेलर और स्टीव वॉ की साइड्स ने एक क्रिकेट की ट्रेजेक्ट्री इतनी बदल दी है कि हम लाइक ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत जबरदस्त खेला है पिछली 2 डेकेड्स में. मगर आई थिंक इन लॉट ऑफ वेज इतनी स्पाइनलेस मतलब उतनी बुरी परफॉर्मेंस है जितनी पहले भी ऑस्ट्रेलियन टीम्स देती आई हैं एशिया में भी और पाकिस्तान में भी. uh, I wouldn't call them the worst, yes, a spineless team, because firstly you have to remember that 6 months ago they were number one in the world, not like even 3 months ago. The second thing is although 2006 onwards they've had a poor record in Asia, but like with the Lehman coming in it was supposed to change. But the biggest problem that they've pointed out in the press conferences and otherwise is that they've never had the chance to be on the front foot. Basically, the Australians love to be on the front foot. Since being 7 for 2, वो Azhar और Yunus की partnership, from that point onwards, Australia have never even had a sniff. And that's the thing. मतलब कि we've been यार हसन, यहाँ पे आई एम सॉरी पहले लेकिन वाली जो तुम्हारी बात ऑस्ट्रेलियन टीम दैट थी वाज कि अगर वो प्रेशर में जाते तो हसन 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 first day of the series. It was first day of the series. It was first hour of the match, and you had the opponent team, which is known for its brittle batting, which had already lost the one day series, and you had them down at 7 for 2. पूरा फर्स्ट जो शुरू के 2 सेशन थे हमारे पहले दिन के, पहले सेशन में तो हमने आई थिंक बनाए 29-30 रन थे, सेकंड सेशन में भी कुछ ज्यादा रन नहीं बनाए थे. सो आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया हैड दैट स्निफ, ऑस्ट्रेलिया डिड हैव अ स्निफ, they could not capitalize on it. So no one can say that they were not ahead. They had the chance to grab the momentum on the very first day of the match, of the series, in fact. Well, let's move on to the second question, slightly related, is Zille Elahi की तरफ से. The best thing about this series that it's not been won by Hal but by method. Discuss. I think even that is arguable because it wasn't Hal matlab in the typical form of the word, but it's like Misbah 2 weeks ago dropped himself from the third ODI. यूनस की हमने पहले बात की, the shit that he was coming into from this series की basically मतलब पता नहीं क्या क्या rumors उठ रहे हैं. He needed a week with his family and friends to basically like focus back into cricket, and them two guys and then Zulfikar and Yasir, matlab the guys who've been doing that, it's not like this is something that was expected. Matlab even if it was method in a very Pakistani sense. यार पर आई वुड आर्ग्यू के क्या कहते हैं हाल, एक तो अब उस्मान नहीं है यहाँ तो ऑब्वियसली इज द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस, मगर एक तो मेरे ख्याल में हाल इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अ बॉलिंग थिंग. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन मतलब मे बी अनलेस यू हैव समथिंग लाइक रजाक और आफरीदी की जो इनिंग्स होती हैं, इवन देन लाइक यू नो इट डजंट, आई डोंट नो, मतलब मेरी नजर में एक तो ये मसला है बैटिंग परफॉर्मेंस के साथ. और ये दूसरी बात है कि ये सीरीज But हमने अपनी बैटिंग पे जीती है, लाइक वी आउट बोल्ड देम डेफिनेटली, बट जो जो ये जो सेंस होती है ना कि द मैच इज गोइंग नोवेयर एंड सडनली यू कम बैक इनटू इट, वही जो अभी थोड़ी देर बाद but पहले day कहते four कि हम first day मैच से बाहर. uh, day four first test, sorry, matlab when we were all giddy, that was basically matlab 4 wickets for 5 runs to finish the day off. Does that not count as a mini hal? I guess, but like I mean क्या कहते हैं वो, it wasn't a decisive spell in the sense कि ऐसा नहीं था कि अगर ये 4 विकेट नहीं लेते तो हम मैच हार जाते. Like मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि beyond the collapses,
इसमें जो फर्क ये था कि यहाँ से शुरू से आपको पता था कि ये इनका मतलब इस सिचुएशंस में ए और बी से ज्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं है, एंड सो दे जस्ट स्टक टू प्लान ए एंड दे केप्ट स्टिकिंग टू प्लान ए इन एवरी सेंस के मतलब वो जो हम बात कर रहे थे जब जॉनसन रन बना रहा था फील्डर पीछे कर लिए थे या जो भी था, मतलब दे स्टक टू अ प्लान एवरी स्टेप अलोंग द वे। तो उस सेंस में आई मीन आई डोंट थिंक इट वाज हाल Um, इट्स मोर सेटिस्फाइंग और नॉट, ये तो एक सब्जेक्टिव बात है, मगर ये एक मजा आ रहा है कि मतलब ऑस्ट्रेलियन फैंस को अब वो एहसास हो रहा है जो हमारे साथ होता था कि आप कहते हैं यार ये मतलब आप बेजार आ जाते हैं कि इनको हम कैसे रोकेंगे, ना ये आउट हो रहे हैं ना ये हमें बैठने दे रहे हैं, मतलब हर बंदे के ऊपर इन्होंने अपना वो जादू चलाया हुआ है, जो बंदा आता है वो चल रहा है। मतलब यासिर खान ने जो कैच ड्रॉप किया था जॉनसन के बाद, उसके बाद से उसने आई थिंक he's taken 4 or 3 or 4 catches and most of them were pretty decent। तो आप yeah. मतलब पाकिस्तानियों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो कैच पे कैच लिए जा रहे हैं। अच्छा, हाल का मतलब जो मुझे समझ में आता है इस तरह से कि हाल का एक और रीजन ये कि इट हैज टू बी वेरी यू नो बड़ा जिंदगी मौत का सवाल बन जाता है उस टाइम पे यूजुअली, क्योंकि वनडे के लिहाज से हमने देखा या इवन टेस्ट मैचेस में भी जो हाल होता है कि बेसिकली ऑन वर्ज ऑफ लूजिंग एंड यू सडनली मेक अ कम बैक। इस मैच में वी वर थोरली ऑन टॉप मोस्ट ऑफ द टाइम और बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी। आई मीन व्हाट इट रिमाइंडेड मी थ्रू आउट पहले टेस्ट मैच में भी और इस मैच में भी कि एम एस सेड अर्लियर कि इट बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया करके हरा देना। हम लोग जो सारे वक्त हम लोग हार रहे होते हैं। अगर आप याद करें इनफैक्ट जो 2004 वाली सीरीज हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, there was a match I think was it at Perth. Shoaib took 5 wickets and Australia was down for like 74 for 5 in the first day. एक तरह को कहने को वो भी हाल था, आपने एकदम पहले दिन में आए मोमेंटम क्रिएटिंग काइंड ऑफ बॉलिंग एंड देन गिलक्रिस्ट केम बैक एंड दे बेसिकली बिकेम ऑस्ट्रेलिया ने अपना सारा डिफेंस वगैरह करके दे केम बैक एंड दे कंप्लीटली रोल्ड ओवर अस। तो उस तरह से वाली परफॉर्मेंस थी हमारी कि वी वर सस्टेन थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज और बहुत ही लोगों ने क्लिनिकल और एफिशिएंट परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान से यू आर सॉर्ट ऑफ यू पाकिस्तान हैज देयर अप एंड डाउन। इंग्लैंड के खिलाफ हमारी सीरीज थी, वी गॉट आउट फॉर 99, वी गॉट आउट फॉर 165, वी हैड दोस अप एंड डाउन थ्रू आउट द सीरीज। एक दिन थोड़ा वीक खेला, इंग्लैंड मेड अ कमबैक, जो 72 वाला मैच आउट किया था इंग्लैंड हैड जस्ट 145 टू विन यार। वी दैट वाज अ हाल इन दिस ट्रू एसेंस, that was Hal what you talk about in terms of main definition what Usman wrote. This series we never Okay, had that kind of moment at all. मूविंग क्या कहते हैं कपल मोर क्वेश्चंस। अच्छा, काफी सारे क्वेश्चंस आए हमारे स्पिन अटैक के बारे में, सो आई जस्ट ट्राई एंड include them in one basic question. Some shorter ones. Taimur Mir ने कहा after today's performance, which new nickname should we start using for Misbah in place of Tuk Tuk? I suggest Miss Bang Bang. If it catches on, you're welcome to it. उसके बाद काफी सारे लोगों ने कहा कि हफीज को ड्रॉप करें, we've already discussed this to death. Finally फिर there's a question के I think अब्दुल्ला वास्ते जमशेद अरशद की तरफ से कि how regretful is Zulfikar Babar's late inclusion in the side? And I think अगर मतलब I mean when we start thinking about late inclusion तो ये almost entire team is a case study of late inclusions by Pakistani standards. यासिर शाह 27, अजमल जो नहीं है 37, मिसबा 36 खुद 37 40, ये क्या कहते हैं इमरान खान 27, राहत भी आई थिंक कितने 25 कितना 26 का इसी है। 26 का है, 26 का 26। है। हाँ इसमें वही बात है, as I've written the piece for hopefully Cricket will put it up in the next day or two about basically कि काफी ज्यादा it has to do with how they see themselves as well कि मतलब I think the rise of team Misbah पहले and the fall has to do with basically that hunger के after like a decade of being undermined, Ajmal and Rahman and Misbah, basically the stars of that team were basically guys, even Azhar के जिनको time के बाद मिला, and once they became the establishment, the Pakistani performances started going down, and now we're doing that same thing again. Zulfikar and Yasin, Sarfraz had a career which basically आप जिस तरह मर्जी उसको देख लो, it's been a stunted career. So again वो वाली बात है, guys coming in, guys who have experience of the first class game, however much we may complain about the first class game, and guys who want to prove themselves, realizing कि बेटा अगर अभी ना किया तो कभी नहीं करेंगे. तो वो वाला factor has been true, even I would say even with, I could go back and say from Asif onwards.
आई थिंक एक और चीज़ है, काफ़ी सारे लोग इतना परेशान होते हैं कि भाई ये पाकिस्तान इतने स्पिनर खिला रहा है, ये स्पिनर से ओपनिंग कर रहा है, ये वो, और बिकॉज हमारे शो का नाम ये है तो एक्सपेक्टेशन होती है कि हम भी इसके खिलाफ होंगे। मगर आई थिंक ये भी एक दो सवाल थे, इसलिए मैं इनका जवाब दे रहा हूँ कि आई थिंक अगर पाकिस्तान ऐसे अटैक कर रहा है अपने स्पिनर्स के साथ, और यासिर शाह और क्या कहते हैं, जुल्फिकार। जुल्फिकार की बॉलिंग, आई मीन जो जस्ट कमिंग बैक टू माइकल क्लार्क की इस टेस्ट मैच में जो दो डिसमिसल्स हैं, आई थिंक उनसे ज्यादा एलिक्वेंट आर्ग्यूमेंट अबाउट पाकिस्तानी बॉलिंग, द नेचर ऑफ दिस पिच, माइकल क्लार्क करियर, मतलब वो कोई लेवल्स, सेवरल लेवल्स पे वो बात आपको बता के देती है कि आज जुल्फिकार बाबर ने उसको बना के जिस तरीके से आउट किया, दैट बॉल turned, it gripped, and it completely beat him. And it basically shows our complete dominance and I mean the variety that we have, frankly speaking. Because Zulfiqar Babar ne set up kiya Clarko, it was an art. This was joy to watch that spell of like 5-6 balls which Clark faced. And as Emre rightly said that Clark basically is also becoming one of those batsmen जो कि अपने बोल्ड होते हैं आपको मजा देखने में. कैलिस का बोल्ड बड़ा मजे का होता है, ड्रेविड का बोल्ड मजे का होता है. Clark is also a great batsman, and he also gets bored and is visually, aesthetically, is a beautiful sight. Okay, तो both the उसके times आगे, यार जब क्लार्क जो बोल्ड हुआ है as a first inning and second innings, just the whole 2 overs leading up to that, मतलब perfection है. एक फास्ट बॉलिंग, रिवर्स स्विंग फास्ट बॉलिंग में दिया था लेफ्ट आर्म स्पिन में. Both the setups. yeah. Okay, so इमदाद अवान has said, मिसबा भाई एक बार ये जुमला कहते हैं, कैसा दिया नहीं दिया अच्छा है भड़वो। J4DYD ने पूछा है, फ्रॉम हेयर अ ड्रॉ विल बी अ डिफीट फॉर पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क। आई थिंक ये काफी लोग कह रहे थे कि पता नहीं ये क्यों खेले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मैंने ये उस वक्त ट्वीट भी किया था कि आई थिंक बड़ा जरूरी है कि ये अब नैरेटिव भी बदले और इनको स्कार करें, कि मतलब इन्हें याद रहे कि हमें मतलब 37 डिग्री में 600 रन मार रहे थे अगले, तो वो ताकि वो भूले मत, क्योंकि हमने भी मतलब आई थिंक आज एक हसाम चीमा जो एक और ट्विटर पे उसने पॉइंट आउट किया था कि वकार, यूनिस एंड मिसबाह ऑल प्लेड दैट हॉरिबल शारजा टेस्ट जहां हम 50-50 59 wala. Even Yunus did too, by the way. हाँ वही वकार, यूनिस एंड मिसबाह Moin as well. तो Moin as well. you can look it up, but anyways, so for all of those guys I think वो भी एक फैक्टर जरूर होगा, क्योंकि हम सब ने देखा ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ क्या किया, और वही जब बात कर रहे हैं कि पिछले 12 साल में उन्होंने हमें एशिया में खेला नहीं है, सो देयर वाज क्लियरली फॉर अ लॉट ऑफ अस देयर वाज दैट फीलिंग कि मतलब जो भी हो जाए, चाहे 1-0 भी लेंगे सीरीज, मगर इनको मतलब जलील करना जरूरी है। और उस लेवल पे मतलब मैं तो मतलब अगर मिसबा और अजहर 5th डे पे टी पे जाके डिक्लेयर करता है, आई स्टिल वुडंट हैव माइंडेड। बिल्कुल सही. क्या आप खेले, Yeah, आपको I ऑस्ट्रेलिया का love. मौका नहीं मिलता रिकॉर्ड करने के भाई. Plus, I love the fact that you're basically like, मतलब जो डिविलियर्स और बेसिकली डिविलियर्स कहता है साउथ अफ्रीका के लिए कि सेकंड इनिंग्स में आके चोट दे अगली टीम को, वो पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं और पाकिस्तान के लिए अजहर अली और मिसबाह उल हक कह रहे हैं. मतलब द कॉन्ट्रडिक्शन इन दैट इज ब्यूटीफुल, स्पेशली कंसिडरिंग कि at the start of the year basically जो आपकी चेस थी, the last you needed what 110 of 19 overs, और फिर उस वक्त भी मिसबाह और अजहर did that. तो this idea of कि यार almost like this is taunting the fan कि भाई when we need to do this, this is the level we can reach. And considering that मतलब बड़ा टुक टुक और छोटा टुक टुक वो दोनों हैं, the contradiction in that is quite beautiful. अच्छा, तो उससे आगे चलते, काफी मजेदार आज मीम्स आए हैं, बड़ा मुझे ये भी मजा आया कि पाकिस्तानी क्राउड मीम्स जो है वो स्टेडियम के अंदर प्रिंट आउट करके ले आया था। माहा मंसूर का सवाल है कि हु डिजर्व्स टू बी मैन ऑफ द मैच, यूनुस खान, मिसबाह और अजहर अली। एंड बिफोर वी आंसर दैट, आई थिंक एक कवरडेल या किसी की ट्वीट में के साथ हिस्ट्री में टेस्ट की कोई बैट्समैन नहीं होगा जिसने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाई है एंड हैज बीन सो ओवरशैडोड both times the way Azhar Ali has. Yeah, Umar is writing about him इसी वजह से basically him being overlooked कि मतलब in the press conference भी उससे पूछा था about Azhar and he was like कि पिछले 4 सालों में जितनी भी हमारी मिडिल ऑर्डर की सक्सेस है, खास तौर पे मेरी और यूनस की, उसकी वजह यही है कि
आजर आते हैं, हमेशा खड़ा रहता है, डिटर्मिन रहता है। The fuck? अच्छा नाजरीन आपको बताते चलें कि सिली टिडी अबू धाबी एयरपोर्ट में ट्रांजिट में है किसी क्राइंग बेबी के साथ, और वो अब हमें ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, और दैट्स द ओनली रीजन वी हैड टू शेड्यूल दिस एपिसोड राइट अच्छा। नाउ. Shoaib, do you have any idea what's been going on? Okay, I don't think Shoaib's ready for us yet. Going हाँ यार, back to मैंने अभी the, क्विक इन्फो की ऐप खोली है प्लेन के ऊपर। तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें नहीं पता? Okay. नहीं, We're मुझे waiting for you. पता है विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड इक्वल कर दिया मिसबाह उल हक ने। हाँ। तो बल्कि शोएब से पूछना, शोएब तुम्हें कहाँ पे तक तुमने अपनी जर्नी तुमने स्टार्ट कहाँ पे की थी, और जब तुम लैंड किए तुम कहाँ पे था, वो क्या तुमने बीच में मिस किया पार्ट? यार मैंने थर्ड डे के एंड पे मतलब खत्म किया था, और अभी मैंने क्विक इन्फो की ऐप खोली तो मुझे पता चला कि मिसबाह उल हक ने विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड इक्वल कर दिया। और उससे पहले फास्टेस्ट 50 का भी तोड़ दिया था, which won't count now. नहीं, which will be which counted will? by the way, which will be counted. अच्छा। There was a discussion on Twitter about this, और क्रिकेट ने मेंशन किया कि that record will stand. That doesn't make sense, but चलो. तो Shoaib, any quick responses? यार मतलब कि यार हो क्या रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ? वो हो रहा है जो आप लोगों के साथ करते रहे हैं। आज उनको अपने बीज बोने का सिला मिल रहा है। उन्हीं को शौक था ना फॉरेन। यार लेकिन वो जो था कि वो मिसबाह उल हक बुड्ढा हो गया है और उसके रिफ्लेक्सेस खत्म हो गए हैं, वो सारी थ्योरी का क्या हुआ? वो उससे मैंने पूछा आज कि मिसबाह की लोगों ने कहा है कि यार 40 साल के हो गए हो, अब तो इस उम्र में कोई वापस ही नहीं आता, ये वो। तो कहते हैं मैंने अब वजन चढ़ा लिया ना, वापस आ जाएगा। तो या अच्छा, M Club 7 का सवाल है, where does Misbah rank in the great Pakistani batsmen? Is he in the top 5? Surely he's gone No. past the likes of Salim Malik. I think top No. 5 में तो नहीं पहुंच सकते आप. नहीं, टॉप 5 में तो यार we already have a top 5 ready. Not Malik. टॉप यार 10 का भी मुझे सट्टा- अभी नहीं पता मुझे. यार people underrate Salim Sata. यार सलीम सट्टा has बड़ा- 15 centuries. He has 15 centuries in pretty decent condition. As in difficult condition, I mean. यार सलीम सट्टा पे यही बात करेंगे, रॉब स्माइथ ने उसको कहा था द बैड विकेट जीनियस, कभी ना भूलें। यार देखो अहमद जो है ना अभी खत्म कर देगा ये एपिसोड यहीं पे। ज्यादा बात की तो सलीम की। बट लाइक लेट मी थिंक, हनीफ, सईद, इंजमाम, जावेद, हनीफ, यूसुफ, यूनुस, ये तो छह हैं आपके। उसके बाद फिर जहीर आपका अब्बास। सलीम सट्टा, जहीर अब्बास। I think he makes the top 10, but I don't think even when he retires, he'll make the top 5. अच्छा, related to this, मिर्जा वहीद का सवाल है कि will this innings help Misbah to bat freely in ODIs? I highly doubt it. I think ODIs में वो कभी भी security नहीं होती जो आज मिसबा के पास थी. Yeah. Unless he's coming at, say, 30 overs, 150 for 2. Otherwise, नहीं. जिस तरह वो करता है उसी तरह हाँ, करेगा। but if he's coming in at 150 for 2 तो वो 450 की पिच भी होगी ना, तो Yeah. Sababtageen By the like way, technical I don't know if you can answer this, but like as related to a couple of other questions people sent in as well. How would you compare Yasir bowling in this match to his debut? Is he pitching fuller and outside off? And is he a bit underbowled? Underbowled काफी और लोगों ने भी कहा, और आपको याद है कि शेन वॉर्न ने ट्वीट किया कि he should bowl middle and leg. Did anyone follow the spell well enough? He's bowling slightly wider. I don't think so. मतलब कि especially start of the first inning of the first test, he was bowling pretty much what he's bowling right now. He's bowling slower though. मतलब कि at the start he was basically like तेज गेंद कराई जा रहा था, काफी flatter. He's basically, as the two tests have worn on, he's bowled slower. He's given the ball more flight. Regarding his line, not really sure. I think
I think it also has to do with basically Zulfikar is his first choice option because Zulfikar offers him everything. Yeah. Acha, do you see And Sohaib Zulfikar Masood has coming? bowled fucking beautifully, yaar. Yes, no Who doubt bowled? on that. Do you see Sohaib Masood coming to the test side in the near future? Again, I don't know किसकी जगह लेगा um, at this. Uh, yaar, once Yunus and Misbah go, which would be anytime between 1 to like 10 months or whatever, I think मतलब दो अब तो आपकी खुली हुई हैं स्पॉट्स. आई होप कि उनमें से मतलब कि वो दोनों एक साथ ना जाएं. उसमें आपके आगे सुहेब और मतलब उमर और फवाद की हम हमेशा बात करते हैं. सुहेब इज एन ऑप्शन बट सुहेब हैज एन इशू अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल जो कि वनडे में कई दफा स्पेशली व्हेन ही इज डाउन द ऑर्डर वो छुप जाती है. बट इन टेस्ट दैट इज गोइंग टू बी एन इशू स्पेशली कंसिडरिंग कि आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह जा रहे हैं. तो Yes, जब तक आई वो exactly. आई आएगा या आई आई थिंक द गाय दे विल रूट फॉर व्हिच मतलब कि उसके बारे में आप I disagree with that is Umar Amin. And I think अगला जो the next in line is Umar Amin and Haris Sohail basically are the next two in lines. बाय उमर अमीन कंसिस्टेंटली उसका इवन पर आई फर्स्ट का मीन ये रिकॉर्ड भी नहीं है उसका. मतलब थ्रू आउट दिस सीरीज बहुत सारे लोगों ने हमारी जो टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे स्पेकुलेट करना चाह रहे हैं कि ओडीआई में क्या होगा. ऑब्वियसली यूनुस खान लीड दैट लिस्ट, मगर बॉलिंग में बैटिंग में हम हर जगह जो है डिस्कस कर रहे हैं कि इसको ले आए या उसको ले आए. मेरे ख्याल में मतलब अभी यू रियली हैव टू कंसिडर कि मतलब आई मीन एक मिसबा के बारे में आज हमें एक बात पता चली कि मतलब ही इज अंडर सो मच प्रेशर के मतलब एक सीरीज जिसमें आपने आई थिंक पता नहीं 25 या 30 लगातार कितने सेशन बने 15 और 24 सेशन लगातार जीतते आ रहे, तब जाके उसके पास इतना कॉन्फिडेंस था कि वो इतने फ्रीली खेले. सो दैट समथिंग जो मतलब आई मीन दैट इज वन एग्जांपल कि हमारी मतलब वो बैटिंग ओडीआई बैटिंग इज नॉट टू मॉडर्न स्टैंडर्ड्स. और जब तक वो नहीं होगी तो आई रियली डाउट कि जो क्या कहते हैं आपके मिसबा टाइप खिलाड़ी वो उनको मौके मिलेंगे ऐसे कि वो आके इतने मजे में खेलते हैं. या प्लस हमारा वर्ल्ड कप भी इस जगह पे हो रहा है, वहां पे हमारी Okay, can't बैटिंग hear पहले भी. Ahmed. हेलो. All right, so let's move on. Zishan का सवाल है कि do you guys think that Azhar Ali is not getting the credit that he actually deserves? I think Hassan just kind of answered that right now. कि within the team, I think उसको recognize करते हैं, but within like I think he's such a quintessential team Misbah player. वो और असद शफीक के क्या कहते I, हैं उनके साथ. एक one more And interesting thing that Misbah said मतलब कि वो कहता है कि वो लड़का इतना डिटर्मिन्ड है कि वो जाके 100 करता है सारा दिन फ्री में वो फील्डिंग करता है और फिर भी वापस आके 100 करने के लिए तैयार है. व्हिच वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मतलब द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड कि आप सेकंड डे बैटिंग करो थर्ड डे सीढ़ी पे खड़े रहो आते ही मोहम्मद फीद और अहमद सिदाद अपनी जक मार दें देन कम बैक टू बेसिकली स्कोर 100 अगेन. मतलब उसकी टेक्निक या उसके स्टाइल पे जो मर्जी आपको. Although मतलब कि I think he's probably the second best player of spinners in this team, but that is a discussion for another day. डिबेटेबल. But जो उसका है ना the concentration levels he's shown over the past 3 days that has been fucking impressive. और एक आई थिंक यंगर व्यूअर्स के लिए कहानी के मतलब जब ऑस्ट्रेलिया बन रही थी तो ये डीन जोन्स के साथ वो मद्रास में खेल रहा था और उसको उल्टियां आ रही थी और एलन बॉर्डर से गालियां दे रहा था कि यू सॉफ्ट विक्टोरियन, अगर तुमने यहाँ रिटायर करके वापस गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. वो जो दैट डॉगडनेस यू नीड इन द सबकॉन्टिनेंट, वो लाइक इवन इफ यू आर फ्रॉम हेयर, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान आई थिंक दोनों टीमों में सबसे बड़ा फर्क था. आज जिस तरीके से मतलब माइकल क्लार्क ने कहा है जो एक बार इसके मतलब पहली 20 बॉलों में यू आर नॉट रियली इन एंड वंस यू गेट पास दोस तो इट्स प्रीटी इजी टू स्टे इन देयर. और वो तकरीबन सारे इवन यूनस और अजहर स्कोर्ड सो फ्रीली उनके साथ होता रहा है कि आई थिंक सिर्फ सरफराज और मिसबा की इनिंग्स ऐसी गई हैं जो आते ही बस आए और चलते गए हैं और शायद डेविड वार्नर की, वरना उसके अलावा बाकियों के साथ ये मसला चलता रहा है. और उस सेंस में क्या कहते हैं ये दोनों टीमों में फर्क है कि पाकिस्तान में अजहर ने खास तौर पे दैट द थिंग दैट वी टॉकिंग अबाउट ही इज ऑलवेज शोन दैट एबिलिटी कि वो शुरू में जितनी भी मुश्किल है वो गुजार लेगा एंड उसके बाद ही इज गॉट enough confidence in himself to like make something of that start.
And again, that's the kind of thing जो हमारी one days में that sort of mentality often doesn't work to give yourself that base and launch that platform. But test में अगर it's not easy doing that and it requires that much concentration जो मतलब कि जो for a foreign team really needs them to go above and beyond. I think आज Saad Shafqat I think tweeted about like when Steve Waugh was batting in Sharjah और वो 59 पे out कर चुके थे, but like he was I think the quote was, I don't know who said it, he was concentrating like a demon. So that's the level you need to bring in these sorts of affairs. Concentration जो आपको चाहिए होती है, doggedness चाहिए होती है. हसन, तुमने ये बात मिसबा से किसी और से डिस्कस की Abid, अबाउट we can't hear पाकिस्तान? you. Yeah. आवाज आ रही है? Can you guys hear me now? Still Yep. can't hear Abid. I can hear you. Okay, go on. हाँ, तो मैं Hassan, I was asking you earlier that have you asked anyone from the team or Misbah either about our run rate basically throughout this series? हमने 4 innings जो खेली हैं, चारों innings में हमारे run rate जो टिपिकल मिसबा टीम मशहूर है जी कि 2.5 2.2 से खेल रही होती है, 2.5 से कम ही खेलती है, इस सीरीज में थ्रू आउट इनकी बैटिंग में वो प्रोएक्टिवनेस नजर आई है इनकी कि 3-4 ओवर में एक चौका भी लग जाता है, स्ट्राइक भी अच्छे रोटेट कर रहे हैं. Is it like something very conscious that they're like prepared and practiced on that, or is it something because Australia की bowling ऐसी है कि it has allowed them to do that? How is it working out? I'll ask him tomorrow, but I don't think कि कोई इस तरह का है. I think basically it has to do with guys, मतलब कि Yunus and Azhar in every innings making the platform. कि मतलब Yunus after like his first 40 or 50 balls he can play that way. And the other thing that they have is कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर नहीं चल रहे थे, दे टर्न टू देयर स्पिनर्स. और मतलब यूनस एंड सरफराज एंड मिसबा बेसिकली मतलब हलवा है उनके लिए कि आप ऑफ स्पिन उनको करा रहे हो. लेग स्पिन का डर था और लेग स्पिनर वो लाए नहीं. वही ना they Abid, can you try disconnecting and reconnecting? You तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है और हसन भी चला गया है. Okay, I don't know if you guys can hear Abid or not. There might be a problem in my end. Uh, so other than that, I think we've gone through almost all the PPQs. We're just going to wrap this up pretty quickly uh, because I don't know, I can't hear Abid and there's no one else left in the show. Thank you everybody for watching. And once again, we would like to send our thoughts out or क्या कहते हैं, our condolences to the victims of the blast in Lahore. And we hope that there is better news tomorrow. Tomorrow will also be the last day that we will be covering this series for the Basis Base Yaar review. So आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने tweets भेजे हैं, who've been watching the show and who've been forwarding it. And we'll see you tomorrow, hopefully with the trophy in hand. But